तो कल जो वेदर फिनोमेना शुरू किए थे उसके अंदर cyclonic aspects are the main things which are remaining for us. Cyclone is nothing but there is a whirlwind, a rotating wind at one place. Okay. अब जब cyclones tropical area में बनते हैं, that basically means in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, तो कुछ forces उसके ऊपर act कर रही हैं जो उसके बनने के लिए बहुत जरूरी है. One of them is water, sea water at about 26 degree or 26.5 degree Celsius. That is the primary requirement. जब वो अवेलेबल होगा तो इवेपोरेशन होगा और हवा भी ऊपर को उठेगी, जो लो प्रेशर हमें चाहिए सेंटर में वो क्रिएट होना शुरू होगा. सो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज द कोरियोलिस फोर्स. नाउ यू नो एट राइट एट द इक्वेटर द कोरियोलिस फोर्स इज 0. If you move a little up or a little low, then you're going to have Coriolis force towards the north or the southern hemisphere. Then third factor is the wind. So the wind has to go in a bit of circular pattern. So a little bit of wind velocity has to be there. As the low pressure center develops at a higher pressure difference as compared to the neighboring areas, more the pressure gradient is there, more will be the wind velocity. So these are the 2-3 starting steps for the tropical cyclone to emerge. And then it is mostly alive as long as it is in the sea. Moment it will hit the coastline, it will die out. इसको बोलते हैं landfall. And moment it passes into the sea again, it can again reappear if there is a low pressure system and water is 26.5 degrees Celsius or above. Okay. So basic सी ये कुछ 4-5 requirement है जो साइक्लोन्स के बनाने के लिए है ट्रॉपिकल एरिया के अंदर. टेम्परेट में साइक्लोन्स की इमर्जेंस बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट से होती है. चलिए पहले थोड़ा सा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को समझ लेते हैं. लाइक आई सेड कि हम इन नोट से कवर करेंगे. सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट ओवर द ओशन इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव ओवर द कोस्टल एरियाज, bringing about large scale destruction due to violent winds, squalls, heavy rainfall, and storm surge. So they are irregular wind movements involving closed circulation of the air around a low pressure center. The closed air circulation is a result of rapid upward movement of the hot air, which is subjected to the Coriolis force. The low pressure at the center is responsible for the wind speed. जैसे हमने अभी बात किया, जितना ज्यादा low pressure होगा उतना wind speed ज्यादा होगा. अब इसकी कंडीशंस देखिए. सबसे पहले क्या क्या चाहिए. फर्स्ट इज लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस. ये कहीं पे आपको 26.5 मिल जाएगा, कहीं पे 27 मिल जाएगा. तो यू रिमेंबर आइदर ऑफ द टू. इसेंशियली एनसीईआरटी 27 डिग्री सेल्सियस बोलता है. ऑनलाइन आप कहीं पे भी चेक करेंगे, नेशनल ज्योग्राफिक इधर उधर, इट इज 26.5. लिटिल बिट डिफरेंस. द प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स enough to create a cyclonic vortex. So that's basically the rotating wind. Small variations in the vertical wind speed, a pre-existing weak low pressure area or low level cyclonic circulation, upper divergence above the sea level system. तो जो आपने पहले पढ़ा कि नीचे से कन्वर्ज कर रहा है, हवा ऊपर उठ रहा है और फिर ऊपर जाके डाइवर्ज कर रहा है. So that is the kind of situation that we are into in case of a cyclone as well. Okay. So बस ये 5 फैक्टर्स जो हैं ये एक साइक्लोन को क्रिएट करेंगे. कल हमने इसका विजुअलाइजेशन देखा था. आई शेयर्ड द वीडियो विद यू आल्सो. सो दिस इज द सिचुएशन. सो एज द 26.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज देयर, द वाटर विल बी इवेपोरेटिंग. एज इट इवेपोरेट्स अप, द एयर विल देन फ्लो फ्रॉम वेरियस प्लेसेस टू फिल इन द गैप, टू फिल इन दैट वैक्यूम. ओके. सो दिस इज द सिचुएशन. एट द लो प्रेशर सेंटर there is going to be convergence and this will diverge upward. बाहर जाके इसको बाहर निकलना है. ठीक है. Okay. Now this is the situation. Upper tropospheric divergence. So it goes in and diverges outside. जब ये ऊपर जाके कूल डाउन हो जाएगा तो फिर ये डाउन ड्राफ्ट शुरू होगा उसी साइक्लोन के अंदर. So here there will be divergence like this. Okay. So both things are happening in the same cyclone. So let's see how they originate. What is the step-by-step way? So in the beginning, water evaporates from the ocean surface and comes into contact with the mass of cold air, forming the cloud.
a column of low pressure develops at the center and winds form around the column, not inside but around. इस तरह से कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड सेंटर में तो बिल्कुल काम है. It is the wall of the cyclone, eye of the cyclone तो सेंटर में आ गया ना, तो उसके बाद जो wall of the cyclone है, central wall, उसके ऊपर ज्यादातर विंड चल रहा है. As the pressure in the central column weakens, the speed of the wind around it increases. That's what we know. अब cyclones अलग अलग wind velocity के हैं. Category 1 cyclone is 119 to 153 किलोमीटर पर आवर wind velocity. जो हमारे यहाँ पे आंधी चलती है, जिसको हम आंधी बोलते हैं, that is somewhere near 70 किलोमीटर पर आवर. That's it. 70, maximum 80. Cyclone शुरू ही उससे बहुत ज्यादा आगे जाके होता है, ऑलमोस्ट डबल चला जाए. Then category 2, 150 through to 174. So slight building damage will happen. Category 3 up to 200 kilometers. Category 4 up to 250 kilometers. And category 5 above 250 kilometer per hour wind speed is there. So not just the roof, but the entire houses, trees, vegetation, everything will be taken away. Okay. So this is the situation of the formation. So here, as the air is rising above in a circular fashion, it moves up and then diverges. The diverging air then cools down and the downdrafts also begin. Okay. This is the eye, which is the सबसे शांत पाथ, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है. But this wall of the cyclone, this has the maximum airflow. Okay. So various kinds of clouds will be formed. At the height will be the cumulonimbus cloud, जो ऊपर को डायरेक्टली बनता है, उसको क्यूमुलोनिम्बस बोलते हैं. सबसे टॉप पे सिरस क्लाउड, देन सिरोस्ट्रैटस, निम्बोस्ट्रैटस एंड क्यूमुलस. अलग अलग तरह के क्लाउड्स अलग अलग लेवल पे बनेंगे, और जहां पे भी निम्बस लिखा है वहां पे बारिश भी होगा. ठीक है. So this is the situation with the tropical cyclone. Eye wall is the most furious wind system. Then टेम्परेट साइक्लोन्स पे चलते हैं. ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की मूवमेंट है. ठीक है. ज्यादातर आपको जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मिलते हैं वो अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, ये बेस्ट सीजन है फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. और यूपीएससी में इनके नाम पूछते हैं कि कहाँ पे इसका क्या नाम है. ठीक है. तो किसी एरिया में इसको हरिकेन बोलेंगे, किसी में विली विली बोलेंगे, किसी में साइक्लोन बोलेंगे. सो दे ऑल हैव डिफरेंट नेम्स. टाइफून भी बोलते हैं. या तो नाउ नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर कंसर्न है अभी के लिए, दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट साइक्लोन. टेम्परेट साइक्लोन्स का सिस्टम हमने कल जैसे वीडियो के अंदर देखा था. वहां पे मेन कारण जो बनने का है वो सी सरफेस टेम्परेचर नहीं है, थर्मल ओरिजिन नहीं है, इट इज डायनामिक. हियर द फोर्सेस आर द मास, एयर masses, as we have seen. So there is a hot air mass and a cold air mass and a dry air mass. Three types of air masses come together. Yeah. And there is a Coriolis force at work. So dynamic origin totally. जो कल एनिमेशन में आपने देखा कि जो वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास टकराएंगे, टकराने के टाइम पे कोरियोलिस फोर्स उनके ऊपर एक्ट कर रही है. एक तरफ से ड्राई एयर मास भी आएगा, ये एक whirlwind क्रिएट करेंगे. दैट इज द ट्रॉपिक टेम्परेट साइक्लोन. So it happens in the temperate region, that is between 35° north to 65° north and south. And this is more pronounced in northern hemisphere due to greater temperature contrast. Southern hemisphere में नहीं उतने temperate cyclones आते हैं. Now, here it is due to frontogenesis. Air front के formation की वजह से होता है, air mass की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे कोई frontal system नहीं है. So here it can form both on land as well as sea, but the thermal origin tropical cyclone can only form on sea. तो वहां पे टेम्परेचर चाहिए और सी से ही बेसिकली वो सारी पावर अपनी ले रहा है. इसका इरेगुलर है, ज्यादातर विंटर्स में बनते हैं. ये सीजनल होते हैं, आमतौर पे लेट समर्स में ही बनते हैं, अगस्त से अक्टूबर इनका मैक्सिमम टाइम है. देन द टेम्परेट साइक्लोन्स दे कवर लार्ज एरियाज. They can be 300 to 2000 kilometers in diameter, but इनका एरिया स्मॉल होता है, डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी ज्यादा है. ठीक है. So they have an inverted V shape while they have an elliptical shape. Then rainfall is very heavy but does not last beyond few hours. एकदम से heavy rainfall आएगा फिर खत्म. Here it will continue raining for many days and even sometimes for weeks.
the temperate cyclone. So it has a long span क्योंकि जो थर्मल ओरिजिन का ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो तो लैंडफॉल करते ही जैसे ही लैंड को टच करेगा खत्म हो जाएगा क्योंकि उसका ज्यादातर सोर्स कहाँ से था, सी से था, ठीक है। लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन है वो तो बर्न लैंड पे भी सकता है, सी पे भी सकता है, तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो लैंड के ऊपर खत्म हो जाएगा एंड इट कैन कंटिन्यू गिविंग रेन, ओके। Wind velocity is higher in the tropical as compared to the temperate. So generally the destruction is due to wind, storm surge and torrential rain in tropical, while there it is mostly flooding. Okay. Path here is east to west and here उल्टा west to east क्योंकि वो easterlies के साथ चल रहा है, ये westerlies के साथ चल रहा है और jet stream के साथ चल रहा है. They move away from the equator in this case, and in this case they also move away from the equator because at equator तो किसी भी तरह का साइक्लोन नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक सिमिलैरिटी भी है, पाथ के अंदर डिफरेंस है क्योंकि इसके साथ ईस्टर्लीज चल रही है, इसके साथ वेस्टर्लीज चल रही है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेंटर is almost equal and here all the sectors of cyclones have different temperatures. साइक्लोन क्योंकि है ही इतना बड़ा, अगर आप टेम्परेट के केस में लेते हो तो इट कैन बी 2000 किलोमीटर वाइड साइक्लोन, so definitely the temperature range can be different. Then सोच के तो करो कि एक यहाँ पे चल रहा है और एक मुंबई में चल रहा है, इतना बड़ा होगा। So between Punjab and Mumbai there is about 1800 kilometers of difference. So one temperate cyclone will cover the entire area between Punjab and Mumbai. So बीच में गुजरात भी है, राजस्थान भी है, तो सब जगह टेम्परेचर डिफरेंस तो होगा ही ना। Okay. Then driving force. So here the driving force is latent heat of condensation that the ocean provides. Okay. Here it is the density of the air masses. Okay. Then influence of jet stream. So the relationship between the tropical cyclone and the upper level air flow is not very clear. Direct relationship नहीं है, यहाँ पे है. So they have a distinct relationship with the upper level airflow or jet streams or Rossby waves. जेट स्ट्रीम्स की वजह से इनको जो ऊपर सर्कुलेशन मिलती है, अपर सर्कुलेशन मिलती है, साइक्लोनिक कोरियोलिस फोर्स, वो एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है और ज्यादा। जेट स्ट्रीम इज नथिंग बट एन अपर एयर, 20-25 किलोमीटर ऊपर जेट स्ट्रीम चलती हैं। एक तो हमारे पास लोअर लेवल विंड्स हैं अर्थ के ऊपर, एक अपर लेवल विंड्स भी हैं 20-25 किलोमीटर ऊपर चलती है। ये बेसिकली जो जेट्स हैं वो इनको यूज करके अपना फ्यूल बचा लेते हैं, वो जेट स्ट्रीम के ऊपर चल पड़ते हैं जिस डायरेक्शन में जेट स्ट्रीम चल रही हो, अगर उन्होंने वेस्टर्न डायरेक्शन में जाना है तो, बिकॉज दे फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्या, व्हाई डू दे फ्लो? आपने पढ़ा हैडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, इस तरह से है ना। अब ये हैडली और फेरल सेल दोनों इस तरह से चल रहे हैं सपोज, ठीक है, दे आर मूविंग लाइक दिस इन अ कंटिन्यूअस मैनर। सो एज दे आर मूविंग, they are working like the fan rotors also. So the wind which is passing through them, that gets pushed at a very high speed in the upper atmosphere, that is about 20 to 25 kilometers stratosphere के अंदर। तो वहां जेट स्ट्रीम चलती है हमारे से 20-25 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। तो उस जेट स्ट्रीम की वजह से भी कई बार नीचे का एटमोस्फेयर जो विंड स्पीड है वो प्रभावित होता है, जो एटमोस्फेरिक सिस्टम है वो प्रभावित होता है, ठीक है। So one of the areas that we feel jet stream impact is जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में आती हैं, ठंड के टाइम पे बारिश होती है तो वो जेट स्ट्रीम के प्रभाव से आती है। तो वेस्ट मूविंग जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो मेडिटेरेनियन सी से उठा के जो विंड सिस्टम है उसको इंडिया में लेके आते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स इन इंडिया और द इंडियन मॉनसून। ओके, लेट्स सी आगे। रॉसबी वेव्स कुछ नहीं है, उसी जेट स्ट्रीम का इस तरह से जो पाथ है अप एंड डाउन, क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाते हुए चलेगा, दैट इज रॉसबी वेव्स। देन the tropical cyclones exhibit fewer varieties of clouds, so they have cumulonimbus and nimbostratus, but here the temperate cyclones show a wide variety of cloud development at various elevations because उसका spread बहुत ज्यादा है टेम्परेट साइक्लोन का, ये चीज ध्यान में रखो तो उसकी साथ ही बहुत सारी चीजें समझ आ जाती है। Then surface anticyclones. So tropical cyclones are not associated with the surface anticyclones and they have a great destructive capacity.
क्योंकि सरफेस पे हिट करते तो ये वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो सरफेस पे ये कुछ नहीं क्रिएट करेगा। टेम्परेट साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विद सरफेस एंटी साइक्लोन्स which precede and succeed a cyclone. तो एक बार साइक्लोन खत्म हुआ तो फिर सरफेस पे एंटी साइक्लोन बनेगा. So these cyclones are again not very destructive. In India, both coasts are affected by the tropical cyclones, east as well as the west. While western disturbances in northwest India, so they are an example of temperate cyclone. The one that is originating in the Mediterranean Sea but having some impact in India as well. So this is the major differentiation between tropical and temperate cyclones. ये जो टेबल है, पिछले साल पंजाब सिविल सर्विसेज का मेंस का एग्जाम हुआ था, तो उन्होंने सीधा यही क्वेश्चन एक पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन. यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन इसी तरह से आ चुका है, तो बस एक टेबल बना के आपको इस तरह से देना है, दैट्स इट. 250 वर्ड्स में क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे आपके नंबर 15 आ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं. एनसीईआरटी के अंदर वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज. अब इसका एक पार्ट तो है जो इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के अंदर कवर करेंगे, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड. ठीक है, यहाँ से बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे. और वर्ल्ड क्लाइमेट जो है ना, जो कोपेन क्लासिफिकेशन और अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से क्लाइमेट को क्लासिफाई किया है कि लेट्स से दिस इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दिस इज एवरग्रीन क्लाइमेट, दिस इज दी टैइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट. 15 तरह के क्लाइमेट और वेजिटेशन है हमारे पास, तो उनके ग्रुप्स हैं. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. As a geographer, if you go to some place, you should be able to specify what kind of a climate is here. Okay. So in India also we got various kinds of agroclimatic zones. For example, agroclimatic zone मतलब वहाँ पे किस तरह की agriculture हम practice कर सकते हैं. ठीक है, तो 16 different agroclimatic zones are available in India only. Imagine. चलिए देखते हैं. The world climate can be studied by organizing information and data on climate and synthesizing them in smaller units for easy understanding, description, and analysis. So, three broad approaches have been adopted for classifying climate. They are empirical, genetic, and applied. Empirical classification is based upon observed data. Empirical का मतलब ये होता है कि facts देखो और उसके हिसाब से classify कर दो. ये काला है, ये गोरा है, ये पीला है, इस तरह से. ठीक है, यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंड है, यहाँ बारिश है, इस तरह से. Then genetic classification attempts to organize climates according to their causes. So genetics का सारा संबंध ही किससे है? What is the cause of something? Causal factors देखते हैं. जैसे हमारे genes हैं, they create certain proteins, they create certain characters within us, they create certain behavior within us. That is the causal factor. So genetic classification atmosphere climate के अंदर भी हम इसी तरह से करेंगे कि भाई यहाँ पे लेट्स से कोल्ड ओशन करंट होने की वजह से इस तरह का क्लाइमेट है. ठीक है, वार्म ओशन करंट होने से इस तरह का क्लाइमेट फैक्टर या चेंज आता है. सो दैट्स द जेनेटिक क्लासिफिकेशन वेयर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई समथिंग इज हैपनिंग. एम्पिरिकल वी ऑब्जर्व एंड वी से ओके दिस इज इट, हम व्हाई में जाते हैं. देन अप्लाइड क्लासिफिकेशन इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस. अप्लाइड में हम क्या देखते हैं कि ठीक है भाई, ये एक पर्टिकुलर एरिया पकड़ लिया, लेट्स से इन इंडिया वी कैन से दिल्ली. सो इफ वी टॉक अबाउट क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, then all the various amounts of knowledge that we have about Delhi, we will apply to Delhi, and then we'll try to create a climate model for Delhi. For one place, that way, applied classification can be done. Okay. Now, Köppen's scheme of classification of climate. So let's see. So this is the most widely used classification of climate, and it is an empirical climate classification. That means it will observe the facts and then will tell you, okay, this is the type of climate. Okay. So he selected certain values of temperature, precipitation, and related them to the distribution of vegetation and used these values for classifying climates. उसने बोला ठीक है भाई, यहाँ पे इतना टेम्परेचर रहता है, साल में इतनी बारिश होती है, इस तरह के फल सब्जियां यहाँ पे हो सकते हैं. चलिए, ये इस तरह का क्लाइमेट बन गया. That's how he classified. He made a table. Now, although developed in 1918 and modified over a period of time, Köppen's scheme is still popular and in use. Köppen recognized 5 major climatic groups. 4 of them are based on temperature and 1 on precipitation. Okay, so
The capital letters A, C, D, and E delineated humid climates and B delineated dry climate. Prelims के अंदर इस तरह की information पूछी जा सकती है, ठीक है? Then the climatic groups are subdivided into types designated by small letters based on seasonality and precipitation and seasonality of precipitation and temperature characteristics. Okay, let's see. The seasons of dryness are indicated by small letters F, M, W, and S, where F corresponds to no dry season. Okay. सबसे पहले तो ये पढ़ लीजिए जो मेजर है, तो उसने कहा कि A, C, D और E ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ह्यूमिड क्लाइमेट को. D is for dry climate. Let's see. A is tropical. Average temperature of the coldest month is 18 degrees Celsius or higher. So this is in the tropics, Tropic of Cancer or Capricorn के बीच में. Then there is dry climate, so which is potentially evaporation exceeds precipitation. जैसे desert में होता है, बारिश नहीं उतनी होती, evaporation ज़्यादा चलती. Then there is warm temperate. So the average temperature of the coldest month of the mid-latitude climate years is higher than -3, but below 18 degrees Celsius. Okay. So this is warm temperate. Then there is cold snow forest climates. Average temperature of the coldest month is -3 or below. Observation है ना, सारी अलग-अलग. Then cold climates. Average temperature of all month is below 10 degrees Celsius. Highlands, so cold due to elevation. So H से highland आराम से आप कर सकते हो. E से average temperature is above. Cold climate simple बोलने के लिए below 10 degrees Celsius ही रहेगा. Cold snow -3. Snow basically 0 degree से नीचे नीचे ही available है, ऐसे याद रख लो. Warm temperate, so it is above the tropic. Tropic के ऊपर temperate के ऊपर फिर आगे polar चला जाता है ना, या frigid zone है. So this is between -3 and 18. इस तरह से इसको डिवाइड करके अपने मन में बना लो पहले, ठीक है? Let's draw it also so that it's easy for you to handle. So here, let's say this is the equator. This is the tropical zone. Then there is the temperate zone, and then there is the polar zone. ठीक है? So इतने के अंदर हमारे पास according to Köppen classification किस तरह का टेम्परेचर है? What is the classification? A is tropical, है ना? So this is entirely the area of A. This one. This is entirely the area of A, both of them. Then इसके बाद जो इसके ऊपर का है, ये वाला पूरा area, this is of what categorization? C. ये बोला ना? This is also C. Then इसके ऊपर जो हमारे पास कोल्ड फॉरेस्ट क्लाइमेट है, दैट विल बी समवेयर लाइक दिस. ऐसे याद रखो, ठीक है? तो कोल्ड फॉरेस्ट को क्या बोला? डी. ठीक है? तो जनरल तो ये हो गया प्लेस. अब इसके बाद क्या है? हमारे पास कहीं ना कहीं ड्राई क्लाइमेट आएंगे जहां जहां पे डेजर्ट बनेगी, ठीक है? और कहीं ना कहीं हाईलैंड्स आएंगे जहां जहां पे माउंटेन्स बनेगी, तो उसको अलग से यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं. और कोल्ड क्लाइमेट इन जनरल किसी ना किसी बेल्ट में अपीयर होता ही रहेगा, तो दैट इज ई. तो ई, एच, ये दोनों को और बी को स्पेसिफाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं, वो एज पर अ पर्टिकुलर लोकेशन आएंगे. इन जनरल एसीडी आप अपने दिमाग में बिठाओ, ठीक है? फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. चलिए आगे बढ़ते हैं. बुक विजिबल? एनसीईआरटी? हेलो हेलो. Yes, sir. यस सर. इसके बाद M is for monsoon climate, W is for winter dry season, and S is for summer dry season. The small letters A, B, C, and D refer to the degree of severity of the temperature. The B dry climates are subdivided using capital letter S for steppe or semi-arid and W for desert. The climatic types are listed in table 12.2
The distribution of the climatic group is also shown here. So let's see one by one. So tropical climate जो है सबसे पहले वाला tropical humid climate A, उसके तीन parts हैं. There can be tropical wet, that means सारा साल बारिश हो रही है, कोई dry season नहीं है, जैसे कि इक्वेटर पे होता है, ठीक है. Then there can be tropical monsoon, जैसे इंडिया में है. तो मॉनसून में क्या है, there is a short dry season, there is a seasonal reversal of wind, right? So that is the meaning of writing monsoonal and short dry season. ये हमारे यहाँ पे भी अब देखिए, पहले तो साउथ वेस्ट मॉनसून चलेगा, तो जून से शुरू होके अगस्त तक ये चलेगा. फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर के आसपास हमारे पास नॉर्थ ईस्ट मॉनसून चल पड़ेगा. फिर दिसंबर जनवरी में नॉर्थ वेस्ट में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगे. बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम ही ऐसा होगा, फेब मार्च और अप्रैल वाला, जहां पे शॉर्ट ड्राई सीजन आपको मिलता है, ठीक है. देन ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई. सो हियर द विंटर इज ड्राई, अदरवाइज बारिश हो रही है, विंटर में कोई बारिश नहीं. तो तीन हमारे पास अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं विद इन द ट्रॉपिकल ह्यूमिड. अब ट्रॉपिकल का देखिए, ए तो एज इट इज रह गया, साथ में वेट, मॉनसून एंड wet and dry. So F, M and W are representative of decreasing amount of precipitation. तो देखिए दोबारा F, M, W. So W is a winter dry season, M stands for the monsoon climate and F corresponds to no dry season. ठीक है, F, M and W. S is for summer dry season, जो इसमें नहीं है, तो इसलिए हमने यूज नहीं किया, ठीक है. तो ये प्रेसिपिटेशन के हिसाब से चल रहा था. AF, AM और EW, इस तरह के तीन हमारे पास बन रहे हैं. फिर ड्राई क्लाइमेट है, तो ये दो जगह पे ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है. एक तो सब ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिक्स के अंदर अंदर, ठीक है, और एक है मिड लैटिट्यूड, मतलब ट्रॉपिक के बाहर. मिड लैटिट्यूड कौन सा है, टेम्परेट एरिया को मिड लैटिट्यूड बोल रहे हैं. तो सब ट्रॉपिकल स्टेप्पे एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ऐसी मिड लैटिट्यूड स्टेप्पी एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट. स्टेप्पे इज अ काइंड ऑफ ग्रासलैंड. तो ग्रासलैंड से याद रख लो कि थोड़ा बहुत बारिश होगी अगर, तभी तो ग्रास आएगा ना, नहीं तो आएगा ही नहीं, करेक्ट. तो सब ट्रॉपिकल और मिड लैटिट्यूड जहां पे थोड़ी बहुत बारिश हो, वहीं पे ये इस तरह का सिचुएशन निकलेगा. So B of dry climate is preserved as it is. Then you have steppe or desert, S or W. So capital S or capital W, they basically are telling you that whether it is a grassland or it is a desert. Okay. Then small h or small k, they are representative of semi-arid or dry. So that's accordingly he has created low latitude semi-arid, low latitude arid or dry. Arid basically means desert. Mid latitude semi-arid and mid latitude dry. चार वेरिएशंस हमारे पास इससे बन जाते हैं ड्राई क्लाइमेट. ठीक है, अब इनकी प्लेसमेंट भी देखें, डोंट वरी. देन देयर इज वार्म टेम्परेट. सो दिस इज इन द मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट सी, इसको हमने अभी ड्रॉ किया था टेम्परेट के अंदर. सो हियर इट इज ह्यूमिड, मेडिटेरेनियन एंड मरीन वेस्ट कोस्ट. तीन इसके क्लासिफिकेशन आते हैं. तो वार्म टेम्परेट एज इट इज रह गया, नो ड्राई सीजन एंड वार्म समर. सो देयर इज CFA. देन देयर इज मेडिटेरेनियन. सो वार्म टेम्परेट तो है ही है, सो देयर इज अ ड्राई हॉट समर, S. फिर हमने यूज नहीं किया था, FMW के बाद S आता था, ड्राई समर. या देन CFB, so there is no dry season, warm and cool summer. So this is marine west coast. So हमारे पास ये तीन इसके variations आ गए. Cold snow के अंदर there is humid continental and subarctic. Humid continental के अंदर there is no dry season and severe winter is there. And subarctic मतलब बिल्कुल polar region के पास में जाके. So there is winter is dry and very severe. Then there is cold climate, which is E. This is in tundra or polar ice caps. So no true summer actually happens. Temperature is always less than 10 degrees Celsius, come what may. And there is perennial ice in polar ice caps. Okay. Then there is highland. So this is basically mountain. So as you go up, the temperature will keep falling down. That is highland.
अब जो यहाँ पे है ना, इन्होंने जो आगे इसको एक्सप्लेन किया है, ये वही सब है जो पीछे टेबल के अंदर लिखा है। सो चाहे आप टेबल ध्यान से पढ़ लो, चाहे यहाँ से पढ़ लो। अब एक चीज जो इसमें एक्स्ट्रा है, दैट इज वेयर इट इज फाउंड. So rather than reading, you should look at a map and understand where it is found. Okay? Let me show you. Let's go to various climate types and try and understand them. Here. ये ऊपर वही कोपेन क्लासिफिकेशन वाला टेबल है जो आपने अभी पढ़ा, ठीक है, एनसीईआरटी वाला. अभी ए इज द ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट वेयर इट इज फाउंड. तो सी, तीन इसकी वेरिएशन आ गई, ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल मॉनसून एंड ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई. So this is the region where it is found in the tropics. Okay. ITCZ वाला area है. So as far as the tropical wet climate is there, so it is distribution is 5 degree north and south of the equator. वहाँ पे इतना clearly नहीं बताया हुआ. So 5 degree north and south of the equator ये मिलेगा. Here there is no Coriolis force and no tropical cyclones happen because it is very near to the equator. ठीक है. So equator ही बोलते हैं इसको essentially. तो यहाँ पे type of climate is also equatorial and dominated by maritime tropical air mass. तो उसकी वजह से evaporation होके बारिश होती रहेगी हर टाइम. ठीक है. Mean temperature is 27 degree Celsius and it is uniform throughout the year. कोई यहाँ पे winter season नहीं आने वाला distinctly. ठीक है. There is no winter. Heavy precipitation. हर रोज शाम को या दोपहर में बारिश होनी शुरू हो जाएगी. It's like this. Regular land and sea breeze. Diurnal range मतलब डे नाइट के टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं होता है, वैसे ही रहता है 27-28 डिग्री. Okay. Precipitation is very high, so it can go as high as 250 to 300 centimeter क्योंकि रोज बारिश हो रही है. No month without rain. Daily average, monthly average is about 6 centimeter. And there are two periods of maximum rainfall, that is in April and October, shortly after the equinox, and least rain falls during June and December, that is during the solstice. The double rainfall peak coinciding with equinox are a characteristic feature of the equatorial climate, not found in any other type of climate. इस तरह की स्टेटमेंट प्रीलिम्स के अंदर पूछते हैं. ठीक है. कि डबल रेनफॉल पीक is found coinciding with equinox is found in which type of climate? So equatorial climate. इस तरह का आपका prelims का क्वेश्चन बनेगा. ठीक है. So that's the situation. Climate graph से आपको कुछ लेना नहीं है. अब इक्वेटोरियल एरिया में किस तरह की वेजिटेशन हो? So in this area there will be tropical rainforest. That's the kind of vegetation that's going to be there. Then in the Amazon lowlands, the forest is so dense, it is called as selvas. है अभी भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही, उसको अमेज़न रीजन के अंदर क्या बोलते हैं? सेल्वास. दैट बेसिकली मींस ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यूजुअली हैविंग अ क्लाउड कवर और अ डेंस कैनोपी. तो ऊपर से देखने पे आपको नीचे ग्राउंड नजर नहीं आएगा, सिर्फ पेड़ ही पेड़ हरे हरे नजर आएंगे कारपेट जैसे. Then, unlike the temperate region, growing season here is all year round. टेम्परेट रीजन में तो कभी कभी बारिश हो रही है, कभी कभी मॉइस्चर मिल रहा है. यहाँ पे तो सारा टाइम मॉइस्चर. अभी the equatorial vegetation comprises of a multitude of evergreen trees that yield tropical hardwood, example magni, ebony and dyewood. आप सोचिए ऐसा प्लांट जिसको सारा साल बढ़िया पानी मिल रहा है, सारा साल न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसके लिए डेफिनेटली हार्डवुड कैरेक्टरिस्टिक्स बन रहा है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी सीजनिंग भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी. ठीक है. तो बेस्ट हार्डवुड्स जो है वो हमें यहाँ मिलते हैं, लेकिन एक ट्रबल है, लंबरिंग यहाँ पे इतनी आसान नहीं होती. Many parts of the tropical rainforest have been cleared either for lumbering or shifting cultivation. Lumbering कई बार इसलिए आसान नहीं होती क्योंकि मल्टीपल स्पीशीज. ठीक है. एक ही तरह के स्पीशीज नहीं होते, कोई भी स्पीशीज चल पड़ेगा. ये देखिए. In spite of dense forest, countries in the equatorial regions are net importers of timber. Why? Because multiple species of tree occur in a particular area. ऐसा नहीं है कि एक जगह पे एक ही तरह का ट्री है तो आप उसको काट लोगे बड़ी आसानी से. कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा. So then it becomes very difficult to commercially utilize that tree. Okay? So moreover, they are tropical hardwoods, so they do not float. They are very heavy. So
तो रिवर चैनल्स के थ्रू इनको ट्रांसपोर्ट करना बड़ा मुश्किल है, और डेंस फॉरेस्ट के थ्रू रोड्स बनाना बड़ा मुश्किल है, क्लियरेंस नहीं मिलती आपको, तो ये एक इशू आता है। ठीक है, एक इसमें कोस्टल एरियाज के अंदर आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे, जैसे इंडिया में मैनग्रोव फॉरेस्ट आर देयर इन वेस्ट बंगाल, नियर टू वेस्ट बंगाल एरिया, जहाँ पे इंडो गैंगेटिक डेल्टा है, तो उधर ही मैनग्रोव्स भी सबसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, देन from the air, the tropical rainforest appears like a thick canopy of foliage broken only when it is crossed by a large rivers or cleared for cultivation. All plants struggle upwards, mostly epiphytes, for sunlight resulting in a peculiar layer arrangement. पेड़ के ऊपर पेड़ के ऊपर पेड़ चढ़ता रहेगा। Epiphyte क्या होता है? It is a plant that grows harmlessly upon another plant, such as a tree, and drives its moisture and nutrients from the air, rain, and sometimes from the debris accumulating around it. तो ऐसे जिनको crawling plants ऊपर के ऊपर चढ़ते जाएंगे, they are epiphytes. Okay? So undergrowth is not very dense क्योंकि ऊपर से जो sunlight है वो penetrate नहीं कर पाता. Canopy is very dense, तो इस वजह से बहुत ज्यादा undergrowth नहीं. ठीक है, हाँ trees के लिए epiphytes जरूर. Okay, then what kind of life people have there? So they are sparsely populated forest areas are there, but wherever it is clear, then the people can have shifting cultivation or they can be hunter gatherers in this particular area. In Amazon basin, the Indian tribes collect wild rubber. In the Congo basin, the pygmies gather nuts. And in the jungles of Malaysia, orang asli make all sorts of cane products and sell to the people. यूपीएससी में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा ट्राइब कहाँ पे, ये वाली इंफॉर्मेशन 6 to 10th वाली एनसीईआरटी में मिलती है, बट यहाँ पे सीधी एक जगह पे दे दी गई। वहां पे इस तरह से पढ़ते हैं आप कि अफ्रीका अलग है, फिर ऑस्ट्रेलिया अलग पढ़ते हो, 6 to 10th की जो पुरानी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की होती है, तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन सारी एक ही जगह है, सिमुलेटेड, इट्स वेरी इजी टू डील विद। ठीक है, सो अमेज़न रिवर बेसिन इंडियन ट्राइब्स, कॉन्गो बेसिन पिग्मीज, मलेशिया औरांग आसली, और सिंपली रिमेंबर औरांग। देन शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट लैंड को जला देते हैं, फिर उसको क्लियर करने के बाद वहां पे थोड़ी देर कल्टीवेशन करते हैं, 3-4 साल वहां रहने के बाद फिर शिफ्ट कर जाते हैं, फिर कोई और फॉरेस्ट लैंड क्लियर कर लेते हैं। दैट्स हाउ शिफ्टिंग कल्टीवेशन गोज ऑन। इन इंडिया इट इज कॉल्ड एज झूम कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट, आसाम के अंदर होती है। तो plantation boom. So with coming of the Europeans, many large plantations have been established, especially in Java, Sumatra, Malaysia, West Africa, and Central America. So a lot of plantation industry came up. Okay. The climate is very favorable for the cultivation of certain crops that are highly valued in the industrial West. For example, natural rubber. तो ये सारी plantation industry Europeans India में लेके आए। Malaysia and Indonesia are the leading producers of natural rubber. The home country Brazil practically exports no natural rubber, वहीं पे consume हो जाती है। Cocoa is another important crop in West Africa. For example, in Ghana and Nigeria, जो आप chocolate खाते हो ना, तो उसमें cocoa cultivation होती है। तो Gulf of Guinea, and it all goes into the American and European chocolate factories or industries. They don't produce chocolate, they only produce cocoa, the raw material. Okay. Then from the same area, another crop, that is oil palm, has done equally well. So Indonesia has now taken to its cultivation, and Indonesia is one of the major suppliers of oil palm to the world. Lately उन्होंने एक्सपोर्ट बैन कर दिया था ऑयल पाम के ऊपर, तो बहुत हल्ला हुआ। वेजिटेबल ऑयल से आप कुछ भी, इनफैक्ट इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल रिफाइंड ऑयल यूज होता है, उसमें भी ऑयल पाम मिक्स करते हैं। जो कॉस्मेटिक्स है उसमें भी ऑयल पाम मिक्स करते हैं, जो परफ्यूम्स हैं उसमें भी करते हैं, पेंट्स में भी करते हैं, हर जगह ऑयल पाम यूज होता है। ठीक है, और पाम ऑयल। Other important crops include coconut, sugar, coffee, and so on. The plantation resulted in the destruction of nearly half of the equatorial forest. So जितनी भी plantation industry है, forest को destroy करके ही वहां पे बनी। ठीक है, so that's why they are very endangering the equatorial rainforests. Now, कौन सी plantation industry किस region में सबसे ज्यादा चल रही है, तो ये भी prelims का क्वेश्चन बनता है।
Palm is in Malaysia and Indonesia. Sugarcane is in Brazil. Coffee, Brazil. Rubber, again Malaysia and Indonesia. Cocoa, Ghana and Nigeria. So they are important. Okay. Now, what are the factors affecting the development of equatorial region? So the equatorial climate and health, this is one of the major issue. Why? Because of excessive heat and high humidity, there will be major issues. High humidity feeds many tropical diseases such as malaria and yellow fever. तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से ये सारे डिजीजेस भी बढ़ जाते हैं. कम्युनिकेबल डिसीजेस आर रैम्पेंट सच एज जर्म्स एंड बैक्टीरिया थ्रू मॉइस्ट एयर. अभी कोविड-19 के टाइम पे ये तो आपको पता चल गया कि मॉइस्ट एयर के थ्रू सबसे ज्यादा जर्म्स और बैक्टीरिया और वायरसेस फैलते हैं. जब वो ड्राई हो जाएगा तो देन देयर इज अ लीस्ट ट्रांसमिशन. या insects and pests not only spread diseases but are injurious to crop also. This is one of the major developmental laggards in the tropical areas. Then jungle hinders the development. बहुत एरियाज में जैसे इंडिया में वेस्टर्न घाट पूरे का पूरा जंगल है, तो उसके अंदर ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है. अब अगर हम वहां पे इंडस्ट्री लगाते हैं तो पहले जंगल खराब करना पड़ेगा, तो ये अपने आप में मेजर इशू है. तो it's a risky business to build roads, railways there, and people there might be exposed to various kinds of snakes, wild animals, and so on. So, although एक बार बना भी लोगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा रहेगी, क्योंकि जंगल और गार्डन में एक फर्क है. गार्डन आप मेंटेन नहीं करोगे तो गार्डन खत्म हो जाएगा, लेकिन जंगल आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ मेंटेनिंग. आपने जो बनाया है आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, कि जंगल अपने आप को रिक्रिएट कर लेगा. अगर आपने एक जगह से पेड़ काट दिए ऊपर से और सड़क बना दी, तो वो पेड़ दोबारा सड़क के बीच में से उगने शुरू हो जाए विद टाइम, बिकॉज उनकी जड़ें बहुत डीप. ठीक है, ओवर दी हंड्रेड्स ऑफ ईयर दोस ट्रीज हैव बीन देयर, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. Whatever infrastructure you create in the jungle, it's very difficult to sustain that infrastructure. Then rapid deterioration of the tropical forest soil. See, what happens is, if there is a lot of rainfall, then whatever nutrition is there in the soil, it will get leached or drained with the water that is happening because of the rainfall. So this is leaching. Topsoil जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट होता है, ज्यादातर जो ऊपर की 3-4 मीटर की सॉइल है उसी के अंदर सारा एग्रीकल्चर चल रहा है, उसी में न्यूट्रिशन है, तो वही वॉश्ड अवे हो जाएगा. ठीक है. इट टेक्स डेकेड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल ऑफ लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स, इसीलिए हमें फिर उसके अंदर फर्टिलाइजर डालना पड़ता है. So a seed doesn't usually germinate. Even if it does, its development is hindered due to little availability of sunlight. Lalang, that's a tall grass, and thick undergrowth spring up as soon as the trees are cut. They choke the restoration of the forest. तो इस वजह से एक बार अगर फॉरेस्ट क्लियर कर दिया जाए, दोबारा बड़े ट्रीज वहां लगाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं. Restoration of the forest becomes very difficult because tall undergrowth will start happening, that is grass. Indonesian island and Java is an exception because of the rich volcanic ash. So volcanic ash has a lot of nutrient in it, so therefore it is easily able to replenish the nutrition. Then livestock. So livestock farming is greatly handicapped by the absence of meadow grass. The grass is so tall and coarse that it's not nutritious. आपने अगर पंजाब में या कहीं पे भी आप देखोगे तो सड़क के आसपास ना बहुत टॉल ग्रास मिलते हैं कई बार. So that is not something that animals can eat. It has a rough texture, it is not digestible for them. So that's why the animals can't survive on that. That's not a fodder crop for them. The few animals like buffaloes are kept mainly for domestic use. So their yield for milk or beef is well below those of cattle in the temperate grassland. In Africa, domesticated animals are attacked by the CC flies, which cause Ghana a deadly disease. So that's one of the facts. Okay, as far as mineral resources are concerned, so gold, copper, diamond, and other precious metals and gemstones are important resources that are found in rainforests around the world. Africa is known for this. Yeah. So, for example, gold mining in the Brazilian and Peruvian Amazon, rare earth mining in Congo, and gold and copper mining in Indonesia and Papua New Guinea. So these are all various kind of natural resources. Oil and gas is also there, and this is taking a heavy toll on the environment and local people.
More than 70% of the Peruvian Amazon is now under concession for oil and gas. So oil and gas extraction is going on at a very rapid pace because that's our main source of energy utilization these days. Now, the question that came in prelims in this is, assertion question dekhiye. Areas near the equator receive rainfall throughout the year. Reason is high temperature and high humidity causes convectional rain in most afternoons near the equator. तो क्या आंसर आएगा जी बताइए. Answer is this. Both assertion and reason are true, and R is the correct explanation of A. Next question देखो. Areas lying within 5 to 8 degrees latitude on the either side of the equator receive rainfall throughout the year. This came in 2003. High temperature and high humidity cause convectional rain to fall mostly in the afternoons near the equator. हाँ जी, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही यहाँ पे आया हुआ. So that's it. Then इस तरह के क्वेश्चन आजकल नहीं आते बिकॉज विजुअली चैलेंज्ड जो बच्चे होंगे तो वो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे. A geographic area with an altitude of 400 meters has following characteristics. तो इस तरह का टेबल बना के अब नहीं दे सकते आप, अब आपको स्टेटमेंट बेस्ड ही देना है. ठीक है, पहले डायग्राम्स भी आते हैं. तो इन दिस ज्योग्राफिक एरिया, if this geographic area were to have a natural forest, which one of the following would it most likely be? अब नेचुरल फॉरेस्ट किस तरह की होगी, हमने टेम्परेचर और रेनफॉल के हिसाब से देखना है. तो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर इज अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस ना. तो दिस इज द सिचुएशन इन द ट्रॉपिकल एरियाज. ये तो क्लियर हो गया. हेलो हेलो. मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रेंज देखो अगर आप, तो आपको ये कौन से एरिया की रेंज लग रही है. 18 डिग्री का थ्रेशोल्ड था, याद है जो आप टेबल देख रहे थे एनसीईआरटी में. लेट मी टेक यू टू द कोपन क्लासिफिकेशन अगेन. The maximum temperature on any day is around 30 degrees Celsius, while the minimum temperature is around 20 degrees Celsius. So this is tropical kind of forest, no? ठीक है, चलिए आगे देखिए. रेनफॉल. सो रेनफॉल कुछ ही ऐसे महीने हैं जब रेनफॉल कम है, जनवरी और फरवरी. बाकी सारा टाइम रेनफॉल चलते चला जा रहा है. तो ये इंडिया जैसा ही नहीं है कुछ कुछ. अब देखो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास. मॉइस्ट टेम्परेट, टेम्परेट तो है नहीं. मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल तो वो भी नहीं है. टेम्परेट फॉरेस्ट वो भी नहीं है. बचा क्या? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो बड़ी क्लियरली हमें पता लग जाएगा. ठीक है, वर यू ऑल्सो एबल टू गेस द सेम? हेलो हेलो. अभी वो इस तरह की चीज ना टेम्परेचर एवरेज मिनिमम मैक्सिमम स्टेटमेंट में देते हैं, अब टेबल में नहीं देते. और रेनफॉल भी ऐसे बता देंगे कि देयर इज एम्पल रेन थ्रू आउट द ईयर. तो जो ऊपर आपने पढ़ी है वही कंडीशंस काम आए. फिर इसी तरह से देखिए, अनलाइक टेम्परेट फॉरेस्ट, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इफ क्लियर्ड can yield productive farmland that can support intensive agriculture for several years without chemical fertilizers. So that's the assertion. Is it true? पहले ये सोच के देखो. The nutrients are leached away. Yeah. So they cannot support agriculture without chemical fertilizers. इसलिए assertion is wrong. ठीक है, अब आगे देखिए. The primary productivity of the tropical rainforest is very high when compared to that of temperate forest. That's true. Why? Because अपने आप में tropical rainforest बहुत lush green. So A is false, but R is true. The answer. Okay. Then biodiversity hotspots are located only in tropical regions. कारण क्या है? ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर टेम्परेचर और मॉइस्चर बहुत अच्छा है, इस वजह से. तो हाँ, ये अपने आप में ठीक है. India has 4 biodiversity hotspots. No, India has 2 biodiversity hotspots. One is Western Ghats and then there is Eastern Himalayas. Okay, so second statement is wrong. Okay, तो biodiversity hotspot ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ only
अगर हम बोलें ट्रॉपिकल तो ये तो टेम्परेट जोन है ना, ये वाली ट्रॉपिकल तो नीचे नीचे रह जाएगी, तो इस वजह से हमारे पास दोनों स्टेटमेंट गलत होती है. They are not located only in tropical regions, they can also be there in temperate region. Purpose of having a biodiversity hotspot is essentially that there is a rich amount of biodiversity in that particular area. That's the purpose. So we'll come to study that in the conservation kind of things. Abhi nahi. Then what type of climate is characterized by two periods of maximum rainfall? So equatorial rainforest हमने पढ़ी लिया. Now आगे जाते हैं. नेक्स्ट ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट. ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट हमने देख लिया, उसके साथ एसोसिएटेड एस्पेक्ट सारे देख लिए. तो दैट्स द सिचुएशन. ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट. ओके, दैट्स वन वी हैव कवर्ड. नाउ मूविंग ऑन. वेरिएशंस. The first is group A, tropical humid climate, tropical monsoon climate. This is the second variation. ठीक है. एंड द थर्ड इसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रॉपिकल मानसून की, जो इंडिया में भी दिख रहा है. देन देयर इज ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट. दिस इज द थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसे ही था ना, देखो, वेट, मानसून, वेट एंड ड्राई. ओके, सो दैट्स द सिचुएशन. इसके अंदर भी फिर अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं. ठीक है. तो दिस इज द मोस्ट एक्सटेंसिव एरिया as far as the UPSC is concerned in terms of variety of facts. Okay, so don't be shying away. डरना नहीं है, सिंपल है. जब उसकी एक बार आप थोड़ा सा लोकेट करके जोग्राफिकली फिर पढ़ना शुरू करते हो, फिर आपको चीजें समझ आती. लेट्स सी. ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स एनसीईआरटी में से करते तो एनसीईआरटी में से बहुत जल्दी ये कवर होता है, बट अल्टीमेटली तो हमें डिटेल ही पढ़नी है, तो हम पहले ही डिटेल पढ़ रहे हैं. ये पढ़ के फायदा नहीं. अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको यही चीज यहाँ से अगर कवर कराता हूँ, देखो, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इज फाउंड नियर इक्वेटर. मेजर एरियाज are the Amazon basin in South America, West Equatorial Africa, and the islands of East Indies. Significant amount of rainfall occurs in every month of the year as thunder showers in the afternoon. The temperature is uniformly high and the annual range of temperature is negligible. Maximum temperature of any day is around 30 degrees Celsius, minimum is 20 degrees Celsius. Tropical evergreen forest with dense canopy cover and large biodiversity are found in this climate. तो वो जो फैक्ट्स आपने यहाँ पे 4 पेज के अंदर पढ़े, उधर एक पैराग्राफ में है. ठीक है. लेकिन जो बेसिक यहाँ पे अब जैसे मिनरल्स रिसोर्सेज हैं, लेलांग ग्रास है, ठीक है, डिफिकल्टी इन फार्मिंग है, या एग्रीकल्चर किस तरह की स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सारे फैक्ट्स उधर एनसीईआरटी में नहीं देते. एपिफाइट्स क्या होते हैं जो यहाँ पे ग्रो करते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड, यूपीएससी में इन सब फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. ओके, अंडरस्टूड. डूइंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट, यू शुड नो द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्स्ट्रा एफर्ट. क्यों पढ़ना है कुछ चीज, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है इसे. ठीक है. ओके, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स. So they exist between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, sun being overhead throughout the year and the presence of intertropical convergence zone makes the climate hot and humid. Annual average range is very low and annual rainfall is high. तो इसके अब 3 विकल्प हैं, wet, monsoon and wet and dry. Let's see tropical monsoon climate first. So monsoons are land and sea breeze on much larger scale. Land breeze और sea breeze तो हमने देख लिया था, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ सी एंड दी लैंड की वजह से हो रहा था. यहाँ पे भी वही है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ सी एंड लैंड, लेकिन बड़े स्केल पे हो रहा है. Unlike the equatorial wet climate, monsoon climate is characterized by distinct wet and dry season and associated with the seasonal reversal of the wet. तो जो ट्रॉपिकल वेट या इक्वेटोरियल वेट में और इसमें फर्क क्या है, बेसिकली ये वाला फर्क. डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, उधर कुछ खास ड्राई सीजन नहीं होता, 2 महीने छोड़. इधर प्रॉपर ड्राई सीजन आएगा विद सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड. विंड भी चेंज होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम. फ्लड in wet season and drought in dry season are common.
usually there are 3 seasons: summer, winter and rainy. उधर ऐसे कुछ season ही नहीं, change ही नहीं होता. Then there is no winter actually. Now distribution of tropical monsoon type of climate. तो 0 से 5 डिग्री के बीच में हमारे पास था ट्रॉपिकल वेट. 5 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ हमारे पास है ट्रॉपिकल मॉनसून. तो ये इसकी लोकेशन याद रखनी, 5 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. So India is also mostly in this particular belt, tropical monsoon. Now onshore, tropical monsoon occurs in summer. Offshore, dry monsoon in the winter. So they are best developed in the Indian subcontinent, Burma, Thailand, Laos, Cambodia, parts of Vietnam, South China and Northern Australia. So ये पूरे एरिया के अंदर इधर और इधर मिलेगा. Climate कैसा है? So the monsoon climate, a big cause of monsoon climate is the difference in the rate of heating and cooling of the land and the sea. This is the old theory that we have. इसके अलावा वो जो एल नीनो ला नीना देखा था वो भी एक पार्ट इसमें प्ले करता है. ठीक है. In summer, when the sun is overhead, the Tropic of Cancer, a low pressure is created in the Central Asia. तो यहाँ पे कहीं low pressure create होगा, तो इस वजह से विंड जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है इक्वेटर से सेंट्रल एशिया की तरफ. ठीक है. देन कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये टिल्ट भी होगा, तो इस वजह से इस तरह से दिख रहा है. द सी व्हिच वार्म्स अप मच स्लोअर remains comparatively at high pressure. At the same time, southern hemisphere experiences winter and a region of high pressure is set up in the continental interior of the Australia. Wind blows outward as the southeast monsoon to Java. After crossing the equator, they are drawn towards the continental low pressure area, reaching the Indian continent as the southwest monsoon due to Coriolis force. कि आप याद कीजिए कि जैसे तो इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में they are to be deflected towards the left, इसलिए उनकी डायरेक्शन क्या होती है? साउथ ईस्ट. If they are above the equator, that means northern hemisphere में, now they are to be deflected towards the right. So then their direction will become southwest. वो change हो जाएंगे directions. This is the direction now, southwest. Okay. In winter the conditions are reversed. So basically अभी ये हवा इस तरह से उल्टा चलना शुरू हो जाएगा. Then how about the temperature? So monthly mean temperature is about 18 degrees Celsius. That's what we have in this area. Then the temperature range during the summer can be 30 to 45 degrees Celsius. And in the winter, it is 15 to 30 degrees Celsius. Okay. Precipitation is between 200 to 250 centimeter. इक्वेटर में 250 सेंटीमीटर से ऊपर है, इधर 200 से 250 की रेंज है. 50-50 का फर्क पड़ता चला जाएगा. ठीक है. Places like Chirapunji and Mausinram, so they have the highest rainfall of around 1000 centimeter. Why? Because they lie on the windward side of the Meghalaya hills. So the resulting of the orographic lift and funneling effect, ये दो चीजें हैं वहां पर. Essentially है कि माउंटेन्स के अंदर जो क्लाउड है वो ट्रैप हो जाता था, फनल जैसी माउंटेन शेप बन जाती. इसकी वजह से तो वहां पे क्लाउड्स फंस के रह जाते हैं और बारिश सबसे ज्यादा वहां पे होती है. और ओरोग्राफिक है, जैसे जैसे ऊपर को उठेगा और ज्यादा बारिश देता चला जाएगा. So that's why in Cherrapunji and Mausinram it's like this. Okay. Now the seasons. So you got distinct winter, summer, monsoon. This kind of seasons are there. So let's see. First is the cool, dry season. That is October to February. Okay. So here what is happening? Outblowing dry winds, northeast monsoon bring little or no rain in the Indian subcontinent. Northeast monsoon सिर्फ ये तमिलनाडु कोस्ट पे जाके थोड़ी सी बारिश देता है, ज्यादा नहीं. Okay. However, a small amount of rainfall in Punjab from the cyclonic sources, temperate cyclone, that is western disturbances, which is frontal precipitation brought by jet stream, and this is vital for the survival of the winter cereal, that is the wheat crop. The northeast monsoon blowing over the Bay of Bengal acquires moisture and bring rains to the southeastern tip of the peninsula at this time of the year. So November, December में तमिलनाडु में बारिश होगी, थोड़ी बहुत केरला में हो जाएगी. The hot dry season, so that is between March to mid of June, जो अभी चल रहा है.
अभी जून शुरू होते ही देयर विल बी रेनी सीजन, ठीक है. So here coastal districts are a little bit relieved by sea breeze and there is practically little rain during this period of time. Local storms can be built up from time to time जिससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा. तो बोलते हैं प्री मॉनसून शावर्स जैसे आजकल हो रहे हैं. Then the rainy season, that is mid-June to September. So with the burst of southwestern monsoon in the mid-June, torrential downpour sweeps across the country. And this pattern of concentrated heavy rainfall in the summer is characteristic feature of the tropical monsoon climate. तो कुछ ही महीनों के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होना ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. जैसे वो वहां पे बोल रहे थे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इक्वेटोरियल वेट क्लाइमेट या ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, वो कौन सा है? डबल पीक नियर द इक्विनॉक्स. याद आ गया? रेनफॉल के अंदर 2 बार पीक आता है. यहाँ पे क्या है? मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज कॉन्सेंट्रेटेड ड्यूरिंग द फ्यू मंथ्स ऑफ द समर, जून टू सेप्टेम्बर. Then there is retreating monsoon, that is a change in the direction of the wind. So it retreats gradually southward after mid-September until it leaves the continent altogether. And then in the October sometimes it is the northeast monsoon which starts. And it has a lot of role in India's economy because आज भी इंडिया में जो irrigated land है वो करीब 50% है और 50% ही हम मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है. Next is tropical marine climate. Outside the monsoon zone, the climate is modified by the influence of onshore trade winds all the year round. This type of climate is called as the tropical marine climate. Such a climate has a more evenly distributed rainfall. तो है तो उसी 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में, लेकिन ये कोस्ट के पास है, सी कोस्ट के पास है, मरीन एरियाज में. इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी मॉड्यूलेशन आ जाती है बारिश के अंदर. सारा साल बारिश होगी. Such a climate is experienced in Central America, West Indies, Northeastern Australia, Philippines, and parts of East Africa, Madagascar, Guinea Coast, Eastern Brazil. तो यहाँ पे मिलेगा. Let me show you on the map also. तो यहाँ पे जो dark brown है, that is the tropical marine kind of areas. तो ocean lines के बिल्कुल देखिए पास-पास आपको tropical marine मिलेगा और वो भी eastern fringe पे मिलेगा. ठीक है, क्योंकि ईस्टर्लीज के अंदर ही है ना ये सारा एरिया. द विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, दिस इज द सिचुएशन हियर. लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स डू वी फाइंड. The rainfall is both orographic, that means after hitting some mountain or something the rainfall will happen, where the moist trades meet upland masses as in eastern Brazil, and convectional due to intense heating during the day and in the summer. तो दोनों तरह की बारिश होती है. Tendency is towards a summer maximum without a distinct dry period. There is a distinct dry period in the tropical monsoon, but there is no distinct dry period in the tropical marine. That's the difference between them. Okay? Prelims के अंदर ये इस तरह की statements चाहिए होती. Due to steady influence of the trades, that means the easterly winds, the tropical marine climate is more favorable for habitation, but is prone to severe tropical cyclones, hurricanes, and typhoons. ये तो चलता रहेगा. ठीक है. Now tropical monsoon forest. So there is a drought deciduous forest, dry deciduous forest, then tropical forest और deciduous forest. सारे इनके अलग अलग तरह के नेम. ठीक है. कई कई जगह पे इसको deciduous forest बोल देते हैं. तो है क्या? Let's see. So broad-leaved hardwood trees are found in this area. They are well developed in Southeast Asia. India में भी तरह की forest आपको ज्यादातर मिल जाती है. The forests are more open and less luxuriant. अगर इसको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से कंपेयर करेंगे तो इसका कैनोपी कवर थोड़ा सा स्पार्स होगा. उधर बिखरे हुए पेड़ नजर आएंगे. The equatorial jungle and there are fewer species. वहां पे तो बहुत सारे थे, यहाँ पे कुछ कुछ species मिलेंगे. Where the rainfall is heavy, example in South Burma and so on, with the tropical marine climate, the resultant vegetation is luxuriant. With the decrease in rainfall in the summer, the forest thins out into thorny scrubland and or savanna.
with scattered trees and tall grass. तो ये सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन के अंदर क्या है? Scattered trees and tall grass. Then in parts of Indian subcontinent, rainfall is so deficient that semi-desert conditions are found in summer. Monsoonal vegetation is thus most varied, ranging from forest to thickets and from savanna to scrubland. तो इंडिया में तो हर तरह की चीज मिल जाती है, डेजर्ट भी मिल जाएगा, डेंस फॉरेस्ट भी मिल जाएगा, स्क्रब लैंड भी मिल जाएगा, सब मिलेगा. Population and economy. So monsoon climatic regions support high population density. Income levels are low because they are underdeveloped or developing countries, most of them. Intensive cultivation is common in the regions with irrigation facilities like Punjab and Haryana. Shifting cultivation is followed in Northeast India and Southeast countries. Major crops include rice, sugar, cotton, jute, wheat, spices. Cattle and sheep rearing is carried out for domestic and commercial purposes. So livestock industry India में अच्छी खासी है. Agricultural development in the monsoon lands. So farms are small and people are always land hungry because India में भी आप agricultural land की अगर बात करेंगे तो ज्यादातर हमारे जो farmers हैं उनके पास 1 एकड़ या उससे कम जमीन है. That is 62% of the farmers have less than 1 acre of land in India. They are called as marginal farmers. Okay. फिर ऐसे ही 84% के पास 2 एकड़ से कम जमीन. तो अगर और थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे तो सिर्फ 4% फार्मर ऐसे हैं जिनके पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन, पंजाब में नहीं और ऑल ओवर इंडिया. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर लाइक लैंड हंग्री. नाउ tropical agriculture dependent on natural rainfall and a large labor force reaches its greatest magnitude in the monsoon land. Farming is the dominant occupation in the Indian subcontinent, China, Southeast Asia, Brazil, everywhere. So rice is the most important staple crop that is grown in this particular area. The most important crop in lowland cash crop is cane sugar. So sugar की ज्यादातर हमारे यहाँ पे cultivation होती है. 2/3 of the world's sugar production comes from the tropical countries. Yeah. Jute is confined almost entirely to Ganga Brahmaputra Delta in India and Bangladesh. Highland plantation happens, for example, tea, coffee, rubber. They are the most important plantations that we have. Coffee के अंदर इथियोपिया और अरेबिया के अंदर originate किया था coffee, लेकिन आज की डेट में Brazil is almost half of the world's production in coffee is in Brazil. Okay, so then tea, it originated in China. Okay, and it is still an important crop there. It requires moderate temperature, heavy rainfall, and well-drained highland slopes for tea cultivation. So the best regions are thus Himalayan foothills in India, Bangladesh, and central highlands of Sri Lanka. So in China, tea is grown mostly for local consumption. Export में China ज़्यादा नहीं है. Then lumbering, that means wood. So most of the forests yield valuable timber and there is a durable hardwood. For example, teak is the most famous one. Okay. Then teak logs are so heavy that they will not float readily on water. It is therefore necessary to poison the tree several years before actual felling so that it is dry and light enough to be floated down the Chindwin or Irrawaddy to reach the sawmills at Rangoon. So that's how they do it in Malaysia. So पहले ही उसको poison करते हैं ताकि वो dead tree होने के बाद थोड़ा सा लाइट वेट हो जाए, फिर उसके बाद उसको लेके जाया जा सकता है. It's very heavy otherwise. इंडिया में थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं. इंडिया में टीक को काटने के बाद पानी के अंदर सबमर्ज करके छोड़ देते हैं सीजनिंग के लिए, तो उसके बाद उसकी यूजेज होती है फर्नीचर मेकिंग. देन अदर काइंड्स ऑफ टिम्बर आर नीम, banyan, mango, which is a national tree for India, by the way. Hello. Banyan tree. Yeah. So what is the biological name of banyan tree? Hello. It is Ficus bengalensis. Okay.
That's the national tree of India. Banyan tree. I hope you can visualize a banyan tree. Have you seen? All of you? Or should I show? देखा हुआ है या दिखाऊं? दिखा देख दो के सर। याद आ जाएगा। है सर। चलिए, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे। Hold on. There it is. That's the banyan tree. Okay. थोड़ा सा दिमाग में रह जाएगा इस तरह से, जिसकी मूछें नीचे को गिर रही हो। That's the banyan tree. Okay. Moving back. Then there's teak. So it is generally used for timber and shipbuilding, furniture building everywhere. Now there's a lot of exhaustion of teak wood. अच्छा, नेक्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे जिसके बारे में हमने बात किया, जो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के अंदर जैसे प्रैक्टिस होता है. So this is the most primitive form of farming. People generally clear the agricultural forest land and do the agriculture there. So what happens is, farming is entirely for subsistence. Everything is consumed by the farmer and it is not traded or sold, because ज़्यादातर आदिवासी लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं. As tropical soils are rapidly leached and easily exhausted, the first crop may be bountiful, but the subsequent harvests deteriorate. जैसे इस क्वेश्चन आया था ना कि they can give agriculture for 7-8 years comfortably, so nothing like that will happen. क्योंकि पहली बार तो ठीक है आपका क्रॉप हो जाएगा, दूसरी बार होना बहुत मुश्किल है. यहाँ पे जो रैपिड लीचिंग होती है बारिश की वजह से, न्यूट्रिएंट्स आर कैरियड अवे. The shifting cultivation is so widely practiced amongst the indigenous people that different local names are used in different countries. So let's see. In India, it is called jhum. In Africa and Central America, it's called milpa. Sri Lanka, it's called chinna. In Java, it's called humma. In Philippines, it's called kengen. Thailand, tamarai. Burma, tongya. And Malaysia, blacking. इसमें से याद रखने वाले अब यूपीएससी के केस में सारे ही, 2-3 ऐसे चीजों को रीडिंग दे दो, बाद में आइडेंटिफिकेशन के लिए आसान है. रट्टा नहीं मारना होता. डोंट ट्राई एंड क्रैम देम. इट्स लाइक जस्ट गिव देम 2-3 रीडिंग्स. इफ इट इज देयर इन द एग्जामिनेशन, इट शुड बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई, क्योंकि आंसर तो उधर लिखा ही होगा, तो देख के याद आ जाए. ठीक है, ऐसा तरीका बनाना है. जैसे श्रीलंका चिन्ना, अफ्रीका मिल्पा, अफ्रीका एंड अमेरिका, एंड नॉर्थ ईस्ट के अंदर झूम. ये 2-3 जरूर याद रख लेना, बाकी चलेगा. ठीक है, तो आने को पूछ सकते हैं यूपीएससी के अंदर घुमा फिरा के. जब कई बार क्या होता है ना, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, इट इज नॉट अ टेस्ट फॉर सिलेक्शन, इट्स अ टेस्ट फॉर रिजेक्शन. क्योंकि इतने सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, 2 लाख 3 लाख लोग पेपर दे रहे हैं. अभी उनको तो कितने चाहिए, 15,000 चाहिए. So they will definitely put questions jahan pe you will do mistakes, so that you can be rejected. Yeah, so that's the reason they put up questions like this sometimes. But whether you are able to do it or not, अब सोच के देखो कितने बच्चे हैं जिनको ये वाले फैक्ट्स यहाँ पढ़ के 1 साल बाद भी पूरा रट्टा रहेगा. How many people? And अगर उन्होंने ये वाला फैक्ट बहुत ज्यादा रट्टा मारा हुआ है तो शायद फिर कुछ और भूल जाएंगे. है ना, मेमोरी तो सबकी एक जैसी है ना. 250 ग्राम ब्रेन आपके अंदर है, 250 ग्राम मेरे अंदर. तो बहुत ज्यादा रट्टा भी मारेंगे, 15 बार भी पढ़ लेंगे, तो भी कुछ तो स्किप करेगा ही. ये नहीं करेगा, कुछ और कर जाएगा. इसलिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. दिमाग पे उतना ही बोझ डालना है जितना कि वो लेने के काबिल है. तो 2-3 रीडिंग लेनी है, दैट्स इट. डोंट ट्राई टू लाइक 100% क्रैम इट. गेट माय पॉइंट? ओके. प्रीलिम्स स्टॉप नहीं करना होता, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता, मेन स्टॉप करना. Now, seasonal reversal of the wind is a typical characteristic of Savannah. This is a question. Seasonal reversal of the wind is a typical characteristic of which of the following? A, B, C, D. Hello, hello. Shruti? Monsoon climate. Yes, monsoon climate. ठीक है. अभी Savannah or tropical wet and dry climate. So the third variation in the same belt. So this is the Savannah. ये सारा desert area के अंदर है.
ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी इधर डेजर्ट है, अफ्रीका में भी डेजर्ट है, इधर भी डेजर्ट है, तो लेट्स ट्राई एंड लुक एट दिस। और डेजर्ट के साथ साथ थोड़े बहुत ग्रास लैंड भी है। सवाना इज एक्चुअली अ ग्रास लैंड। So this is basically tropical wet and dry climate और Sudan climate, अलग अलग नाम है, लोकेशन के हिसाब से चलेंगे। So this type of climate has alternate wet and dry seasons similar to monsoon climate but considerably less annual rainfall. तो यहाँ पे wet और dry तो है लेकिन बारिश बहुत कम होती है, नहीं कम होती। No distinct rainy season like monsoon climate. Floods and droughts are common. Vegetation, wildlife and human life are quite different from the monsoon climate regions. What is happening here? Let's see. The distribution of savanna climate. So it is confined within the tropics and is best developed in Sudan. आज तो सुदान को भी दो कंट्रीज में डिवाइड कर दिया, एक सुदान और एक साउथ सुदान. Hence, its climate is called Sudan climate. Now, it is a transitional type of climate found between the equatorial rainforest and hot desert. इसके बाद फिर वो धीरे धीरे डेजर्ट की तरफ जा रहा होता है. Then there is African savanna. The belt includes West African Sudan and then curves southward into the East Africa and Southern Africa north of the Tropic of Capricorn. ये इतनी टेंशन लेने के बजाय बस ये विजुलाइज कर लो, ठीक है? So that's the Sudan type of climate. Then South American savanna. So there are two distinct regional names. For example, Llanos of the Orinoco Basin and the Campos of the Brazilian highland. ये यहाँ के grasslands हैं, ठीक है? Llanos और Campos. Then Australian savanna. So there is a located in the south of the monsoon strip in the northern Australia, running from west to east in north of the Tropic of Capricorn. And there is Indian savanna. So this is in the northern Karnataka, southern Maharashtra, and Telangana. So they exhibit the characteristics of both semi-arid and savanna climate, somewhere here in India. Due to irrigation and cultivation, this region is different from other savanna regions. तो बाकी सब जगह तो बहुत ड्राइनेस नजर आता है, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, ठीक है? तो savanna climate में रेनफॉल कितना है? 80 to 160 सेंटीमीटर. So it is decreasing with the distance from the equator. जितना दूर दूर होता जाएगा इक्वेटर से उतना और कम होता जाएगा. In the northern hemisphere, the rainy season begins in May and lasts till September. Southern hemisphere is from October to March. Mean annual temperature is greater than 18 degrees Celsius at all times. The monthly temperature hovers around 20 to 32 degrees Celsius. Highest temperature does not coincide with the period of the highest sun. Why? Because of the rainy season. Days are hot and nights are cold. There is an extreme diurnal range of temperature. तो रात बहुत ठंडी हो सकती है, even frosting हो सकती है. Now winds, the prevailing winds of the region are trade winds. तो मतलब सारा साल एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, which bring rain to the coastal districts. Coastal areas में बारिश ठीक ठाक रहेगी इस पर्टिकुलर जगह पर. Then they are strongest in the summer, favorable position of the ITCZ, but are relatively dry by the time they reach the continental interior or the western coast. कि वो अपना मॉइस्चर जो है वो पहले अगर इधर से इधर चल रहा है, बारिश यहाँ हो जाएगी, आगे तो ड्राई रह जाएगा विंड, ठीक है? In the West Africa, the northeastern trades in fact blow offshore, that is from continent to shore or sea, from Sahara Desert and reach Guinea coast as a dry dust-laden wind. Okay. So what is the reason for alternating wet and dry season in the savanna type of climate? क्यों होता है ऐसा? Onshore wind in summer brings rain. Offshore winds in winter keep the climate dry. That's why it happens like this. Now, natural vegetation. So savanna landscape is typified by tall grass and short trees. Savanna का ये कहने का मतलब ही है कि tall grass and short trees. That will be the type of vegetation there. The grasses are also called as bushvelds. Savanna grassland को क्या बोलते हैं? अलग नाम bushveld. Trees are deciduous. That means they shed their leaves in the cool and dry season, prevent excessive loss of water through transpiration. Okay? For example, acacias. They are usually having broad trunk to store water.
Many trees are umbrella shaped, exposing only a narrow edge to the strong wind. तो जैसे आपको कोकोनट ट्रीज दिखते हैं उस तरह के भी आ सकते हैं. Then in true savanna lands, the grass is tall and coarse, 6 to 12 feet high grass is there. It's called as elephant grass and may attain the height of even 15 feet. Grasses appear greenish and well nourished in the rainy season, but turns yellow and dies down in the dry season. As the rainfall diminishes towards the desert, the savanna merges into thorny scrub. पहले savanna grassland है, फिर dwarfs हैं, फिर धीरे धीरे desert plants मतलब cactus and thorny scrubs like that will happen. Animal life, so it is called the big game country. तो यहाँ पे टाइगर्स, लायंस एक्सेट्रा सब मिलेंगे. गेम कंट्री क्यों बोलते हैं? ज्यादातर लोग यहाँ पे हंटिंग के लिए जाते थे इसलिए. क्योंकि हंटर के लिए क्या चाहिए? एनिमल दिखे, हंटर ना दिखे. तो एनिमल तो इधर कहीं पे भी ग्रासलैंड में डेजर्ट साइड में चल रहा है और हंटर यहाँ छुप के बैठ रहा है शेड के अंदर, तो उधर से आराम से स्नाइपर राइफल लेके हंट कर सकता है. नाउ so there are two main groups of animals in savanna. There are grass-eating herbivores and flesh-eating carnivores. So herbivorous animals include zebra, antelope, giraffe, deer, gazelle, elephant, so many. Then species of reptiles and mammals, including crocodiles, alligator, everything is there. Life and economy क्या है? So many tribes live in the savanna region. The tribes like Maasai tribes of Eastern Africa are pastoralists, while Hausa of northern Nigeria are settled cultivators. अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्राइब्स हैं. देन ये याद रखना, लेकिन ट्राइब्स सवाना रीजन के अंदर दो ट्राइब्स हैं, मसाई pastoralists, Hausa in Nigeria are cultivators. Then the old grazing grounds of Maasai tribe in the Kenyan highlands were taken over by the immigrant white settlers for the plantation agriculture and dairy farming. So that's why there is a lot of struggle for land in Kenya also. Then the cattle kept by the Maasai are kept entirely for the supply of milk. They don't slaughter the cattle for meat. Agriculture is barely practiced there. Hausa are the tribe of settled cultivators, so which are in Nigeria. Now they do not practice shifting cultivation. Instead, they will clear a piece of land and go on cultivating there for years. तो हौजा एंड मसाई ये याद रखना, दो ट्राइब्स हैं सवाना के अंदर. क्रॉप्स किस तरह के होते हैं? लेट्स सी. तो इट्स नोन फॉर इट्स प्लांटेशन एग्रीकल्चर फॉर कॉटन, केन, शुगर, coffee, oil palm, groundnut, and even tropical fruit. Tropical Queensland, that's in Australia, despite its scarcity of labor force, has been very successful in developing huge empty land. Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi, so they have large scale production of cotton. Cotton का कोई भी आप clothing लेते हो, तो for example this one, 70% of the raw material, that is the cotton itself, इसकी प्राइसिंग के अंदर वो 70% प्राइस सिर्फ रॉ मटेरियल का है. अगर 100 रुपए की शर्ट है तो 70 रुपए की सिर्फ कॉटन लग रखी है उसके अंदर. क्यों? ये कॉटन की प्रोडक्शन ड्विंडल डाउन करती चली जा रही है over the years. That's the issue. Then farming. So droughts are long due to unreliable rainfall. Political instability hinders the development of infrastructure. आमतौर पे in African countries के अंदर आप देखते हो there are militia, there are army coups, there are various kinds of troubles which are going on in the political stability. Sudan climate with distinct wet and dry periods is also responsible for rapid deterioration of soil fertility. Many savanna areas therefore have poor lateritic soils which are incapable of supporting good crops. Dry season की वजह से nutrient खराब हो जाता है. Cattle rearing. So Savannah is said to be the natural cattle country, although the quality of grass does not support large-scale ranching, yet it is done. The cattle varieties are also poor and yield little meat or milk, but क्योंकि यहाँ पे agriculture भी अच्छा नहीं होता, तो थोड़ा बहुत इस वजह से लोग livestock के ऊपर निर्भर करते हैं. The export of either beef or milk from the tropical class is so far not important, क्योंकि इतना ज़्यादा well developed नहीं है. Few regions progressed with adaptation of technology. For example, Queensland has become Australia's largest cattle producing state. Both meat and milk are exported.
Now, which of the following is the characteristic climate of the tropical savanna region? अभी 2012 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखो जरा, क्या आंसर आना चाहिए? D part. Rainfall in winter only, an extremely short dry season, a definite dry and wet season, rainfall throughout the year. थर्ड लग रहा Tropical है सर। savanna, हाँ, extremely short dry season. 4 part. Dry and wet. Definite dry and wet. Let me take you to the rainfall part ताकि आपको याद आए. देखिए. So here it is. Rainfall decreases with distance from equator. Mean rainfall ranges from 80 to 160. Highest temperature during, but occur just before the onset of the rainy season, that is in April in the northern hemisphere and October in the southern hemisphere. So हमारे पास छोटा सा एक rainfall का window है. That is a very short season for rainy season. But ऐसा तो नहीं है कि winter rainfall हो रहा है. ऐसा तो कुछ नहीं दिया गया. In southern hemisphere, the rainy season is October to March. In the northern hemisphere, the rainy season begins in May and lasts till September. तो नॉर्थ में भी समर्स के टाइम पे रेनफॉल हो रहा है और साउथ में भी समर्स के टाइम पे ही रेनफॉल हो रहा है. ठीक है, और इट इज नॉट थ्रू आउट द ईयर, इट इज मई टू सितंबर. ठीक है, अब दोबारा पढ़ो. तो रेनफॉल इज नॉट थ्रू आउट द ईयर, ये पता हो गया. विंटर में नहीं होता, ये भी पता चल गया. समर में होता है. एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन, ऐसा भी नहीं, ज्यादातर ड्राई है. So there is a definite dry and wet season. फिर यही लिख सकते हैं ना. हेलो हेलो, this is the only option you are left with. Yes, sir. Yes. Okay. So now coming to the desert climate. So A वाली क्लासिफिकेशन हमारी खत्म हो गई. ट्रॉपिकल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया? So there is a tropical wet, there is a tropical monsoon, and then there is a tropical savanna. 3 categories we have studied. अब आप इनको अच्छे से रट्टा मारो before we go forward. ये जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसी डॉक्यूमेंट से पढ़े, एनसीईआरटी से मत पढ़े. यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्ट्स ज्यादा है. तो इन तीनों को डाइजेस्ट करो आज. कल को फिर हम ड्राई क्लाइमेट की वेरिएशंस पढ़ेंगे. इनको स्लो एंड स्टेडी जितना एक बार ढंग से पढ़ लोगे उतना इजीली याद हो जाएंगे. अगर इनके थ्रू रश करने की कोशिश करोगे उतना बार बार पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, चलिए. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. वेरी वेल. एनी डाउट्स यू हैव, यू कैन आस्क.